अब सोचो एक ऐसा टेम्पल जो हजारों साल पुराना है, जो विदाउट एनी सीमेंट कंस्ट्रक्ट किया गया है, एंड विच इज स्टिल शॉकिंग द प्रेजेंट टुडेज इंजीनियर्स आल्सो कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया था. हाउ वाज दैट पॉसिबल? यस, वेलकम टू बृहदेश्वरा टेम्पल of Thanjavur, which was built by Raja Raja I during 1010 AD when we were having the imperial Chola dynasties. अब इस टेम्पल के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो हमें आज भी क्वेश्चन कर देती हैं कि उस समय में ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया होगा. So the first interesting fact is the construction of this शिखरा. Now as I have said that there was no use of cement. तो ये शिखरा कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया? ये सिंगल रॉक कट आर्किटेक्चर भी नहीं था. तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय इंटरलॉकिंग ऑफ स्टोन्स. सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज अबाउट द कैपस्टोन known as the गुंबद. So this was not an ordinary stone. This was 80 tons का stone which was kept on the शिखरा. So the second interesting question here is कि ये 80 टन का इतना हेवी बड़ा स्टोन पर कैसे लेके गए? And as we are talking about the 10th century, 9th 10th century, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठता है उस वक्त तो मशीनरीज भी नहीं थी. Then still how the Cholas made it possible to carry out this 80 ton का stone on the शिखरा. Now some of the historical debate says that they used the elephant, okay, which were taken from a temporary road that was being connected to the शिखरा. Now the third interesting fact is the shadow geometry of this temple. इसका मतलब ये है कि इस टेम्पल का शैडो जो है कभी भी कॉम्प्लेक्स के बाहर नहीं जाएगा, इवन इन द हाई आफ्टरनून एट 12 noon. The fourth interesting fact is the massive Nandi of this temple, which is giving quite positive vibes to all the devotees who visit this temple. And the fifth interesting part is the world record of this temple. Now during 10th century, it was one of the tallest standing construction in the whole world. So this is the richness of our culture and heritage. And this tells us that our kings were not just the rulers, they were a proper statesman, they were proper empire builders.